Good morning, guys. Welcome back to my channel. So today we are going to do the remaining questions, and I will try my best to wind up the remaining questions as soon as possible. And I will not be making any further video on the practical questions of this particular chapter because I believe these questions are enough. And before we move on forward, I would literally request you to take the screenshot of these particular sheet so that whenever you solve the question, you have formulas in front of you. Okay. These are the basic formulas that are used throughout the chapter. Okay. Now, let's try to solve the first question for the day. The details of the three portfolios are given to you. You are further given that the risk-free rate of interest is 5% and the expected market rate is 18%. The risk of the market portfolio is 15%. Now, find out whether the portfolios are efficient or not. In order to decide the efficiency of the portfolio, I need to do the CML calculation. Now, if the CML returns come out to be equal to the expected return, I will say that these are efficient portfolios. If it comes out to be below the expected return, okay, let's say your CML returns are coming out to be 15%, whereas your expected return is 11%, then this particular portfolio will not be efficient. Okay. What is the formula of CML? CML का formula होता है RF plus RM minus RF, ठीक है, divided by this into this. ठीक है, so we will be calculating for each portfolio. I will be calculating only for one plus RM, that is 18 minus 5 sigma M, that is market risk, 15 into portfolio risk, that is 13. Okay, this is how you need to calculate the CML. Let's check we have done correctly or not. This is the formula that I have used. See, हमने भी यही किया है, 5 plus 18 minus 5 divided by 15 into 13. Right? Okay. This will come out to be 16.26. Now, CML के according, it is coming out to be 16.26 and the expected return is this. CML का is, okay, so it is not efficient. It is not efficient. If the expected return as per CML, given expected return that the portfolio lies on CML and hence it is efficient. Now in Z, it will come out to be equal, approximately equal, see, या greater. So it is efficient. Okay. यहाँ पे आपका expected return 15 था and यहाँ पे it is coming out to be 18.85 and hence it is not efficient. ठीक है, ये भी पढ़ लेते हैं for better understanding. We know that the portfolio is efficient if it lies on the CML line. Hence, we need to calculate the expected return of these portfolio as per CML. The given expected return are based on the probability distribution, okay, or some another analysis. If the expected return, we have this, otherwise the portfolio is inefficient. Now let's move on to the second question for the day. Following information is available in respect of the security A and M, find out the beta. I am not doing this particular question because बहुत easy है. We have to just apply the formula of the beta. अब beta का formula क्या है? देखो, I have written over here. ठीक है, covariance into SM into this. ठीक है. Now say you will say कि यार यहाँ पे probability तो दिया हुआ नहीं है, तो फिर हम ये कैसे निकालेंगे? हम कैसे निकालेंगे? We will be using the mean. Expected return के लिए we will be finding out the mean. How? 15 plus 12 plus 14 plus 20 plus 11 divided by 5. This will come out to be mean of A. ऐसे ही हम क्या निकालेंगे? Mean of B. Then we will find out the D. D कैसे आएगा? 15 minus whatever the mean is. ठीक है, deviation आ गया. Then we will do deviation का square. Fine. Next step क्या होता था? P into deviation, but यहाँ पे P तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे?
d1 into d2 ये निकाला, ठीक है। d1 into d2 से we have calculated the covariance. Now as we have not multiplied with p, we will be dividing by n. Okay, तो sigma m square तो we can easily calculate d square आ जाएगा, right? तो d square divided by n, this will come out to be my variance. See what I am saying. फर्स्टली ए एंड बी, ठीक है। इसने क्या निकाला, डी स्क्वायर। ये कैसे निकाला इसने डी स्क्वायर, मीन 18 माइनस 16 का होल स्क्वायर, दिस विल कम आउट टू बी दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू। ओके, डी स्क्वायर निकाला, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन किया, ठीक है। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 8.24. Similarly, they have done d1 into d2 to find out this. This is what I told, d1 into d2, ठीक है, divided by n. Where they have done divided by n is here. Then you can just simply put on the values, covariance divided by market variance, that is minus 8.04 divided by 8.24. Now let's move on to next question. Third, calculate beta. Again we have to calculate the beta. What is the formula of beta? Let's write it down. Now let's try to break this formula. We have done covariance का formula इतने बारे, ठीक है। क्या होता है, into correlation, right? Can I just cancel this? Sorry, this is, and can I cancel this? So it will come out to be, ठीक है। Now let's use this particular formula for this particular question. Mean return is this, mean return from market portfolio is this, standard deviation from return on market, this is nothing but, so can I write 14% here? Standard deviation of security, that is 23%, this is 14%, coefficient of correlation 0.70, okay? So this is how you calculated the beta. Let's see, so 0.70 here into 0.23 divided by 0.14, coming out to be 1.15. Conclusion, very important, beta is more than 1, right? It is an aggressive security. A 10% change in return of a market portfolio will result in 11.5% change in the return of the security in the same direction. Why did I write same direction? Because it is a positive beta. अगर ये मेरा नेगेटिव बीटा होता तो मेरी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही होती, ठीक है। Next, following information is available in respect of security L and M. Mean return, again very easy. Mean return कैसे निकालोगे? P into mean return security L का return. Then you will take out the sigma, that will come out to be your total expected return. Market portfolio का कैसे निकालोगे? P into this, right? P into MI निकाला, total करा, आ गया. Variance, nothing but this. How do you calculate? इससे पहले we move to D1, that is the deviation. Then we move on to D square. Then we do P into D square. इसका sum will come out to be your variance. Similarly, इस वाले पे करना है बीटा. एक बार ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई, then simply हमें इस फॉर्मूले में लगाने, ठीक है। एक ऐसे काटा, अगला यहाँ पे तुम्हें कोरिलेशन नहीं दिया हुआ, तो आई वुड प्रेफर कि ये फॉर्मूला ना यूज करें. इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन जस्ट सिंपली यूज द फॉर्मूला कोवेरिएंस, क्योंकि ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, राइट? ये हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? P इंटू
D1 into D2. Okay. Now let's move on to the next question, that is 15th. I hope ये सब कुछ समझ में आ रहा है because we have done lots and lots of question. ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं करवा रही हूँ. इन केस यू वांट और डिटेल में यू कैन जस्ट वॉच दी प्रीवियस वीडियो ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न, जहाँ पे ये मैंने फंडा समझाए भी है एंड और भी मैंने थोड़ा डिटेल में रुक रुक के बताया है एंड इट इज वेरी इजी. बाय दिस टाइम आई गेस ये सब पता होना चाहिए बिकॉज 7 days आर लेफ्ट फॉर द एग्जाम. फिफ्थ, यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट टू सिक्योरिटीज. एक्चुअल रिटर्न ये है, ठीक है, एंड बीटा फैक्टर ये दिया है. मुझे क्या निकालना है, एसएमएल लाइन पे ये एफिशिएंट है या नहीं. नाउ एसएमएल में क्या डिफरेंस था, एसएमएल में ये डिफरेंस है कि इट इज ओनली कंसिडरिंग द बीटा एंड बीटा इज अ मेजर ऑफ अ सिस्टमैटिक रिस्क. ठीक है, तो यहाँ पे इसका सीएपीएम वाला फॉर्मूला यूज होता है. सीएपीएम का फॉर्मूला इज दिस. ठीक है, तो अगर मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, आई कैन इजिली कैलकुलेट द एसएमएल एंड देन आई कैन इजिली जज कि मेरा ये एफिशिएंट है या नहीं है. ठीक है, एंड एसएमएल का डायग्राम इज लाइक दिस. अगर सिक्योरिटीज ओवर प्राइस्ड है तो वो यहाँ आएंगी और अगर वो अंडर प्राइस्ड है तो वो यहाँ आएंगी. ठीक है, एफिशिएंट वाली यहाँ आएंगी. नाउ लेट्स सी, आरएफ इज गिवन टू बी 7%. RM is given to me as 17%, then again 7%. P का निकाल रही हूँ beta into 0.6. So this will come out to be for P, similarly for Q. Let's check. We have done this. Yeah. So this is the formula we used. 7 plus 17 minus 7 into 0.7, this will come out to be 14%. And अगर हम similarly Q का निकालेंगे तो 23% आ रहा है. Now we will be comparing this with this. ठीक है, CAPM के according, that is CML के according, it should be 14%, but it is only giving you 12%, and hence the security is overpriced. So overpriced security will lie below the SML line. And this is efficiently because it is equal. Okay, since actual return of Q is same as the expected under CAPM, Q is efficiently priced and it will lie on SML. The actual return of security P is lower than the expected return under the CAPM, and hence security P is inefficiently priced. It lies below SML and it is overpriced in the market. Sixth question for the day, find out the expected return and risk. These are the information for the returns. These is for standard deviation. This is P12, that is PXY in this particular case. And these are weights given to me. I hope ये बहुत ही ज़्यादा easy है because expected return कैसे निकालोगे, 50% into 15 plus 50% into 20, दोनों का सिग्मा करके you will get your expected return. Risk का क्या फॉर्मूला होता है, अगर हम वेरिएंस निकालने पे आए तो क्या होता है, W1 का स्क्वायर सिग्मा 1 का स्क्वायर, W2 का स्क्वायर सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस 2 W1 W2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड P12. Why did I use this particular extension is because मुझे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया हुआ है, तो सिंपली आई कैन पुट ऑन 0.80. ठीक है, यहाँ पे भी यू हैव टू रेप्लिकेट द सेम थिंग, बट हमारे वेट्स क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे. पहले में इट विल बी 0.5 एंड नेक्स्ट में इट विल बी 0.3 एंड 0.7. ठीक है, अगर इतना इजी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में तो कांग्रेट्स. 7th, following information is available about the two securities P and Q. Expected return is this. Okay, if the portfolio मुझे given है 30% and weight 1 and weight 2 is given to me 70%. I need to find out the expected return. How will I do it? 30% into 13% plus 70% into 16%. I hope यही किया होगा because this is very easy. I'm not just checking my answers too. See, 0.3 into 13, 0.7 into 16. You will get 15.1%. Now, if you want minimum risk,
your coefficient of correlation should be -1, and if you want maximum risk, it should be +1. That is, I am talking about the P12 values. ठीक है, तो आपका जो रिस्क का फॉर्मूला है उसमें जो लास्ट वाली वैल्यू आती है 2p, इसमें आप मिनिमम रिस्क में एक बार -1 डालेंगे एंड एक बार +1 डालेंगे फॉर द मैक्सिमम रिस्क. नाउ यू मस्ट रिमेम्बर कि यहाँ पे एक बार वी डिड द फॉर्मूला दिस वेट ऑफ मिनिमम ए. ये हमने फॉर्मूला जब यूज किया था व्हेन वी हैड टू कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो इन सच अ मैनर कि हमारा रिस्क मिनिमम हो. बट यहाँ पे हमें ऑलरेडी वेट्स दिए हुए हैं, तो हम वेट्स फिर से क्यों निकालें. ठीक है, वी हैव टू ऐसा निकालना कि इस पर्टिकुलर वेट्स में हमारा रिस्क मिनिमम हो जाए. तो हम कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट को -1 एंड +1 कर देते हैं. सी, इफ यू नीड मिनिमम पोर्टफोलियो रिस्क -1, मैक्सिमम रिस्क +1. ठीक है, find out the correlation between the returns if the standard deviation of the portfolio is this. Standard deviation of the portfolio is 18% and एक में मुझे दिया हुआ है 15%. तो यहाँ पे एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे दूसरा. ठीक है, मुझे क्या निकालना है, कोरिलेशन. दैट इज आई हैव टू फाइंड आउट द P12. ऑल द इंफॉर्मेशन इज गिवन टू मी. जस्ट लास्ट में मुझे P12 की जगह वैल्यू निकालनी है. Find out the standard deviation, matlab I have to find out this particular value if weight 1 is equal to 25, weight 2 is equal to 75 and P12 is equal to 1. So I can simply put on these values in the formula. So ye 24 diya hua hai, this is given to me 16. So what is the formula? ये तो आप I guess याद हो जाना चाहिए. Wait. Okay, this is the particular formula. All the information is given. Just put on the information and you will get your answer. 9th. An investor has a portfolio of 5 securities. ठीक है, expected return परसेंटेज में निकालना है. ठीक है, you can do in 2 ways. मतलब जो मुझे सिंपल लग रहा है मैं वो बता देती हूँ कैसे निकालो. देखो, you have 2 securities, तो आप सबसे पहले ये करो 15,000 into this. ठीक है, तो you do 1,15,000, 12% and you calculate. Similarly, you do for all the securities. यहाँ पे आपके क्या आ जाएंगे, रिटर्न्स. ठीक है, तो आप क्या करो, टोटल रिटर्न्स अर्न अपॉन दी टोटल इन्वेस्टमेंट. टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे निकालोगे, इसको प्लस करके इनटू 100, यू विल गेट योर रिटर्न्स. बुक ने कैसे किया है, बुक ने इसे पहले वेट्स में कन्वर्ट किया. वेट्स में कैसे कन्वर्ट किया, 1,50,000 डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट. ठीक है, यू गेट द वेट्स का परसेंटेज एंड देन यू सिंपली मल्टीप्लाई बाय 12% एंड ऐसे एंड यू विल गेट योर एक्सपेक्टेड रिटर्न. सी, this is what we did in the last question. We had to find out just this value. ये सब हमें given था. ठीक है, तो इसने क्या किया, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड निकाल लिया. ठीक है, वेट्स निकाला. वेट्स कैसे निकाला, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख. ठीक है, 0.15 वेट्स आया, सिंपली मल्टीप्लाइड. ठीक है, एंड यू गॉट दिस. लेट्स मूव ऑन टू द 10th क्वेश्चन. In a portfolio of a company, rupees 2 lakh has been invested in asset X. तो दो asset है, asset X and asset Y. 2 lakh यहाँ पे invest किए हैं and 2,80,000 यहाँ पे invest किए. Returns is 8.5% and Y का it is 10.2%. Okay, he has invested also in security asset X Z, that is 3,20,000, which has an expected return of 12%. What is the expected return of the portfolio? Just multiply, 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 or
वेट्स कन्वर्ट कर लो, मल्टीप्लाई करके टोटल कर देना, ठीक है। The return of two securities A and B for possible state of nature are given below. Expected return on security A and B, very easy. A and B multiply, add, ठीक है, multiply, add. Risk in terms of security A and B. Risk of security A and B. How will you find out the risk? Return निकाल लिया, D निकाल लो, ठीक है, D1 निकालो, इसका D1, देन D1 का स्क्वायर कर दो, P इंटू D1 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा वेरियंस, वेरियंस का स्क्वायर रूट लेके यू विल गेट योर स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। सिमिलरली सेम प्रोसीजर इन दिस पर्टिकुलर थिंग। कोवेरियंस, कोवेरियंस क्या होता है? कोवेरियंस इज D1 इंटू D2 इंटू P का सम, right? Once you get the covariance, you will be easily able to get the coefficient. How? Covariance is nothing but this into P12. We got this from the third part. ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, कैसे आएगा ये? We just calculated in part 2, so we can simply calculate P12. That is the coefficient of correlation. I hope यही किया है इसने 23 में। Probabilities return A return B. सबसे पहले मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, यू गॉट योर रिटर्न्स, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, यू गॉट योर रिटर्न्स, ओके। देन ये एक ही स्टेप में कर देता है। इफ यू आर कंफर्टेबल इनफ टू डू ऑल द थिंग्स इन वन पर्टिकुलर स्टेप, मोस्ट वेलकम टू डू इट। इसने क्या किया है, सबसे पहले दिस इज द डी, ओके, देन ही हैज कैलकुलेटेड द डी स्क्वायर, okay, then he has multiplied with b. He has done all the things in one go. If you are comfortable enough, you can also do that. निकाला ये सब step and then add. This was the variance. I had to square root. क्या आ गया? risk. Covariance कैसे निकाला? P into D1 into D2. See, इसे यहाँ पे फिर से निकालना पड़ा है। अगर उसने पहले ही हमारा वाला फॉर्मूला यूज किया होता है ऐसे अलग अलग, तो उसे यहाँ पे फिर से नहीं निकालना पड़ता, ठीक है, हमारा एक ही बारी में टेबल पूरा प्रिपेयर हो जाता। तो P इंटू D1 इंटू D2, दिस इज द D1, दिस इज द D2, तो P इंटू D1 इंटू D2, you got your sigma, it is the covariance. Then you use the formula covariance is equal to, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया and you got 0.989. 12th question. Now let's move on to the 12th question. Apply the rule of dominance. I don't think this is at all important. I am just skipping this particular question. Zero probability of coming in exam. Agar fir bhi, if you want to read the answer, just for sake of reading, just go through this particular answer. Take a screenshot and go through it by yourself, please. Okay. Now let's solve the 13th question of the day, and I believe this would be my second last question for this particular video. Risk-free return is 10% and expected return on BSc Sensex, that is market return, is 18%. Risk measurement by the standard deviation of BSc is equal to 5%. How would you construct an efficient portfolio अगर तुम्हें return 16% चाहिए तो? Why did I not write this? Because ये तो हमेशा zero ही होता है. Risk of the risk-free security is zero. अब मुझे 16% returns चाहिए, तो मैं कैसे W1 और W2 में अपना पैसा बांटूं? मतलब कैसे मैं कितना पैसा risk-free investment में डालूं और कितना पैसा मैं WSC Sensex में डालूं? तो risk-free में मेरे को कितना return मिल रहा है? इतना, ठीक है, प्लस 1 माइनस W1, ठीक है। W2 की जगह कैन आई राइट W2 प्लस W1 वुड बी 100%, तो W2 की जगह आई कैन राइट 1 माइनस W1 इंटू 18%, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं एंड वी विल गेट W1 एज 25%. W1 में यू शुड इन्वेस्ट 25% ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट, मतलब आपको BSc में कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? 75%, ठीक है।
अब रिस्क कैसे निकालोगे? रिस्क तो इसका तो 0 ही होता है, ठीक है। और अगर मार्केट का रिस्क निकालने जाओगे तो 75% पे अगर तुम्हारा 5% रिस्क है, जस्ट मल्टीप्लाई दिस एंड यू विल गेट योर आंसर। सी इसने क्या किया है, 16% यू नीडेड द टोटल रिटर्न, इसने W को तुम्हारा मार्केट रिटर्न लिया है, ठीक है। तो मार्केट रिटर्न पे यू आर गेटिंग 18% एंड ऑन रिस्क फ्री यू आर गेटिंग 10%। तो 75% you have invested on your market index, right? 75% in the market and 25% on risk free asset. तो पोर्टफोलियो रिस्क फ्री एसेट का तो 0 हो गया, तो 75% का 5% रिस्क है, तो इट इज 3.75. A security has a standard deviation of 5%. This is the risk of a security. The correlation of coefficient is equal to 0.20. I have a habit of writing P12, ठीक है, बट याद रखना जब ये क्वेश्चन में आएगा अगर P XY सिक्योरिटी है तो you have to write PXY, PAB, okay, PSN, like this. And market standard deviation is equal to 4%. The return we get from the government security, that is the risk-free securities, is 10% and return from market is 15%. What is the required return on the security? How will you calculate this? Very easy, I guess. You will be finding the beta. Beta से आप क्या निकालोगे? Return. ठीक है, तो आपने beta निकाला. What is the required return of the security? How will you do that? Beta. ठीक है, आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे. ओके, बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आई होप एवरी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू अस, ठीक है, एंड वी कैन जस्ट सिंपली फाइंड आउट बीटा. बीटा को यहाँ पुट करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट द रिटर्न. सी a secure we did this, right? तो हमने पहले बीटा निकाला, it comes out to be 0.875. we applied the CAPM model and we found out the returns of this particular security. That's all for the day, and in case you need these particular answers, you can just text me, you can just DM me on ruchikoyal2306@gmail.com and I will provide you with a PDF of question along with the answer and with few hints that you can just quickly look at and solve the answers. Okay, thank you so much. Finally, this particular unit is over from my side, especially the practical part. The remaining part of the mutual funds and all I will be uploading a bit later. Okay, I will be first now completing the equity analysis, which is the major portion left of the practical portion. Okay, so practical part फटाफट खत्म करते हैं, then we will move on to the theory quickly. So next video, most probably I will be discussing the practical question of equity analysis. Thank you so much. Have a great day. All the best.